Hello everyone. So in my previous video I have uploaded questions from 1 to 10 of probability chapter from RD SHARMA. So the next questions are here. Question number 11 is a number is selected from numbers 1 to 25. The probability that it is prime is. Now what is the total possible outcome? Total possible outcome is number 1 to 25. So how many numbers are there? 25 numbers are there. Now the probability that it is prime, it is prime. What is the prime number? Favorable outcome is from number 1 to number 25. What are the prime numbers? The prime numbers are, let's start from 2. 2 is the smallest even prime number. 2, then 3, then 5, then 7, then 11, then 13, 17, 19, 23. How many numbers are there? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 prime numbers are there. So what is the probability of this event? Is 9 by 25. Option C. So our next question is, which of the following cannot be the probability of an event? So let's see. Total possible outcome is, which of the following cannot be the probability? Means we know that here the probability, here it is, the probability is always lie between 0 and 1. Means it lies between 0 and 1. Means it can be 0 or greater than 0. It can be less than 1 and equal to 1. So it lies between 0 and 1. So 2 by 3 value is less than, it is less than 0. Now this is also minus 1.5. Now it is less than 1. Sorry, it is less than 1. It is less than 1. Now minus 0.5 is less than 0. Less than 0. It should not be less than 0. It should be 0 or greater than 0. 0 or greater than 0. But it is less than 0. So this option will be cut. Now 15%. 15% means 15 by 100. That is 0.15. So this value is between 0 and 1. This value is between 0 and 1. So yes, this is also 0.7 is also value between 0 and 1. So this can be, and this is also the value less than 1. Minus 0.15 is the option B. That is minus 1.5 cannot be the probability of an event. So next question is, if P of E is equals to 0.05, then P of not E. As we know that P of E, any P of E plus P of not E. This means not E. This means not E. Means the same event not happening, equals to 1. Now P of E is given 0.05. 0.05 plus P of E equals to 1. Now P of not E will be equals to 1 minus 0.05 will be equals to, how to do this? 1 minus 0.05 minus, that is 5, this is 9, and this is 0.95. Option D. Next question is,
which of the following cannot be the probability of occurrence of an event? Same thing we have already discussed, that probability of E is greater than equal to 0, less than equals to 1. So this value is greater than 0, less than 1. This value is also greater than 0, less than 1. This is also greater than 0, less than 1, but this is greater than 1. It should not be greater than 1. So which of the following cannot? So option D. So next question is the probability of a certain event. What is the certain event? What is the meaning of certain event? Certain event, or we can say it the sure event. Certain event or sure event means if a probability of the event occurrence is sure, means let's take an example. If a dice is thrown, what is the probability of getting numbers? What are the numbers we get? 1, 2, 3, 4, 5 and 6. If I say what is the probability of getting these all numbers 1, 2, 3, 4, 5, 6 is 6. And what is the total possible outcome is also 6. Favorable outcome 6, total possible outcome 6. So probability is 6 by 6, that is 1. Same, if an event is saying that sure it will happen, all the things it will happen, and the total possible outcome is also same, so in that case the probability is 1. Certain event or sure event is 1, option B. So next question, the probability of an impossible event. What is impossible event? Impossible event means if the event does not happen, it is impossible to happen. Means if, same example I will take, if a dice is thrown, the number we get is 1 to 6 numbers. If I say what is the probability of getting 7 number, is it possible? No. So what is a favorable outcome? In this case will be 0, and total possible outcome anything, it will be 6, or for any other question it will be other thing. So therefore the probability here is 7 will not occur, 0 by 6, that is 0, impossible event, so 0. When it is asked about the impossible event, the probability is always 0, option A. Next question is, Arushi sold 100 lottery tickets in which 5 tickets carry prizes. If Priya purchased a ticket, what is the probability of Priya winning a prize? Means here it is said that, let's take out the total possible outcomes first. Total possible outcomes is equals to 100 tickets. How many tickets are there? 100 lottery tickets are there. So if Priya purchased a ticket, what's the probability of Priya winning a prize? For winning a prize, what is the bracket? How many tickets carry prizes? 5 tickets carry prizes. So that much she will win. Therefore, favorable outcome will be how much ticket for win. To win, how many tickets it needs? 5 tickets. This 5 tickets is winning. Okay, so therefore probability is she will in 5 by total will be 100, that is 5 to 20, that is 1 by 20 is option C, 1 by 20. Next question is, a number is selected from first 50 natural numbers. What is the probability that it is multiple of 3 or 5? A number is selected from 50 natural numbers. So total possible outcome will be 50. Yes or no? 50 numbers are there. What is the probability that it is a multiple of 3 or 5? So favorable outcome will be multiple of 3. It will be multiple of 3 or
5 मीन्स 3 भी होना चाहिए और 5 भी होना चाहिए, दोनों होना चाहिए. सो लेट्स सी फॉर द मल्टीपल ऑफ 3 फर्स्ट और मल्टीपल ऑफ 5. ठीक है, 3 का देखेंगे 5 का देखेंगे, ये दोनों नंबर में से ही होना चाहिए. सो वी विल इंक्लूड दिस बोथ नंबर्स. सो व्हाट इज द मल्टीपल ऑफ 3? मल्टीपल ऑफ 3 के लिए एवरी नंबर वी डोंट नीड टू काउंट, जस्ट सी टेबल ऑफ 3. टेबल ऑफ 3 में क्या आता है? 3 1 3 सबसे पहले एंड डॉट डॉट गोज ऑन 3 10 30. ओके, सो हाउ मेनी नंबर्स आर देयर? 10 numbers are there. Now again let's go 3 11s are 3 11s 11s are 3 12s are 3 4s are up to how much? 50 के नीचे तक नंबर्स आना चाहिए. So last will be 3 into 11 dot 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 same 3 16s are 48. This is the last and 3 1s are 3 is the first. ओके, आफ्टर दैट इट विल बी ग्रेटर देन 50. सो कितने नंबर्स हो गए यहाँ पर? 10 प्लस यहाँ पर 6 ना, 16 ना, 6 नंबर हुए ना, 1 11 12 13 14 15 16 मीन्स 6 नंबर्स यहाँ पर 10 नंबर, दैट इज 16 नंबर यहाँ हो गए. नाउ द मल्टीपल ऑफ 5. मल्टीपल ऑफ 5 मीन्स सेम द टेबल ऑफ 5 1s are 5 डॉट 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 5 for 10s are 50. So how many numbers are there here? Also 10 numbers are there. Okay, 50. Now one more thing we have to say that अभी जो नंबर दोनों में रिपीट हो रहे हैं दैट नंबर वी हैव टू एक्सक्लूड बिकॉज वो तो एक ही बार आएगा ना नंबर्स. सो द टोटल नंबर है 16 + 10 पहले करते हैं 26. ना उसमें से सेम कौन सा है? द सेम नंबर्स आर सेम नंबर्स. व्हाट आर द सेम नंबर्स हियर? 1 15 3 5 are 15 5 3 are 15 1 5 6 are 30 6 5 are 30. Another one will be 3 15s are 45. Okay, and 5 9s are 45. So this 45 number is also same up to this much. These three numbers are same, they are occurring in both. तो वो दोनों को एक यहाँ पर भी आ रहा है यहाँ पर भी, तो एक तो एक्सक्लूड करेंगे एक जगह पे, तो -3 कर देंगे. इट विल बी 23. Okay, therefore the favorable outcomes is 23. Therefore probability will be equals to 23/50. Option D. Now let's move to next question. A month is selected at random in a year. The probability that it is March or October. A month is selected random. Total possible outcome. A month is selected random in a year. Probability क्या है इसका? Month. What is the probability that it is March or October? कितने months है हमारे? 12 months है. 12 months are there. Okay. एक मंथ सिलेक्ट हो रहा है ईयर में, 1 ईयर में 12 मंथ्स है. प्रोबेबिलिटी क्या होना चाहिए? फेवरेबल आउटकम शुड बी इट इज़ मार्च और अक्टूबर ना. मार्च और अक्टूबर मीन्स मार्च भी होगा अक्टूबर भी, इस दोनों में से कुछ भी मीन्स वी विल टेक 2. देयरफॉर प्रोबेबिलिटी इज फेवरेबल आउटकम से पॉसिबल आउटकम 12. 2 1s are 2 6 are, that is 1/6. Option B. Next question is, from the letters of the word mobile a letter is selected. Total possible outcomes. From the letters of mobile a letter is selected. First total possible outcome कितने? 1 2 3 4 5 6. How many letters are there? 6 letters are there. A letter is selected. What is that letter? Event क्या है? The probability that the letter is a vowel. Event क्या है? Favorable outcomes. Outcome क्या होगा? क्या probability क्या चूज़ करेंगे हम लोग इवेंट में? इट शुड बी ए भावल. भावल क्या है हमारा? 5 vowels are there, A E I O U. But here in the mobile, what is the vowel here? O is the vowel, I is the vowel, and E is the vowel. Means how many? 3 vowels are there. Therefore probability of this event is 3/6. 3 1s are 3 2s are, that is 1/2. Option D. Next question is, a die is thrown once. The probability of getting a prime number is. Total possible outcome. A die is thrown once. एक डाइस थ्रोन हुआ. डाइस में कितने नंबर्स होते हैं? 1 2 3
4 5 and 6. The probability of getting a prime number, फेवरेबल आउटकम्स क्या हो जाएगा, प्राइम नंबर आना चाहिए. क्या क्या प्राइम नंबर्स है इसमें से, 2 है, 3 है एंड 5 है. हाउ मेनी, 3. यह टोटल कितने हैं, 6 नंबर्स में थे 3 प्राइम नंबर आने चाहिए. देयरफॉर द प्रोबेबिलिटी इज 3/6, दैट इज अगेन 1/2. ऑप्शन डी. नेक्स्ट क्वेश्चन इज the probability of getting an even number when a die is thrown once is same. चलो टोटल पॉसिबल आउटकम क्या होता है, टोटल पॉसिबल आउटकम्स. नाउ द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन इवन नंबर व्हेन ए डाइस इज थ्रोन वंस, एक बार थ्रोन हो रहा है, सेम चीज सेम थिंग. टोटल पॉसिबल आउटकम्स इज 6 एंड इवन नंबर favorable outcomes is even number is 2 4 and 6. How many, 3. Therefore probability of event of getting an even number when a dice is rolled, that is 3/6, that is 3 1s are 3 2s are, that is 1/2. option D. Next question. A box contains 90 discs numbered 1 to 90. Total possible outcomes is 1 to 90, means how many number total, 90 numbers are there. Now if one disc is drawn at random from the box, the probability that it bears a prime number less than 23, मतलब क्या आना चाहिए, फेवरेबल आउटकम्स. 1 to 90 नंबर्स हैं, डिस्क है वो नंबरिंग कंटेनिंग 1 to 90. एक डिस्क मुझे लेना है, द इट शुड बी अ प्राइम नंबर लेस देन 23. सो लेस देन 23, व्हाट इज अ प्राइम नंबर, दैट इज 2. स्मॉलेस्ट इवन प्राइम नंबर, दैट इज 3. आफ्टर then 5, then 7, then 11, 13, then 17, 19 and less than 23. 23 will not be included here, less than बोला है. So 1 2 3 4 5 6 7 8. how many, 8 numbers are there. Therefore probability of E will be 8/90. cancellation, 2 4s are 2 4s are 8, 2 5s are 10. Four by 45. So here it is actually 45 in the book by mistakenly written. 4/45, option C. Okay, now next question is the probability that a number is selected at random from the numbers 1 2 3 4 order 15 is a multiple of 4. Total possible outcomes that the number is selected, what are the numbers, 1 to 15. how many numbers are there, 15 numbers. The probability that a number is selected random from the number is a multiple of 4. favorable outcomes क्या हो जाएगा, multiple of 4. multiple of 4 क्या है, मीन्स 4 के टेबल में क्या किया था, नंबर 1 4 1s are 4 4 2s are 8 12 16. okay, numbers only 3 will be because 16 is greater than 50. so how many numbers are there, 3 numbers are there. therefore the probability is 3/15. 3 1s are 3 5s are, that is 1/5. option C. next question is two different coins are tossed simultaneously. so be careful, two different coins, when two coins are tossed, when two coins are tossed, जब भी 2 कॉइन टॉइस होता है तो कितने वहाँ पर रहते हैं आउटकम्स, व्हाट आर द आउटकम्स. नाउ व्हेन 2 कॉइन्स आर टॉस्ड, व्हेन 1 कॉइन इज टॉस्ड, फॉर 1 कॉइन what are the outcome, head and tail. okay, head and tail is the outcome. 2 outcomes are there. how many, so what is the formula for taking out how many times it is tossed, it is tossed 2 times. and in one tossing, what is the outcomes, there are 2 outcomes in one tossing and 2 times it is tossed.
ओके, सो 2 to the power 4 is 4. कितने हो गए? 4 is the number, total 4. If the coin is tossed 3 times, if it is tossed 3 times, so एक टॉस में कितने आउटकम्स हैं? 2 होते. कितना टाइम्स टॉस हुआ? 3 टाइम्स. सो 2 to the power 3 is 8. 2 into 2 into 2 8. सो 8 होते. नाउ यहाँ पर 4 है. लेट्स सी हियर. सो 2 coins, what it will be the possibility? H, head and head, tail and tail, tail head and tail. These all are the possibilities. Now it is says this is a total 4 is the total possible outcomes. Now probability of getting at least one head favorable outcome will be, what is the event? At least one. At least one means कम से कम. At least one means हो गया मेरा कम से कम. कम से कम एक होना चाहिए, ज़्यादा होगा भी तो चलेगा. एटमोस्ट कभी कभी आता है. एटमोस्ट मीन्स ज़्यादा से ज़्यादा होना चाहिए, कम होगा भी तो चलेगा. एटलीस्ट वन हेड, सो एक होना चाहिए, एक से ज़्यादा होना चाहिए, एक से कम नहीं होना चाहिए. एटलीस्ट वन तो होना ही चाहिए. एटलीस्ट वन हेड, एटलीस्ट वन हेड, एटलीस्ट वन हेड और वन से ज़्यादा. यहाँ पर भी एटलीस्ट वन हेड और ज़्यादा होगा भी तो चलेगा. हाउ मेनी? 3. इट इज़ नॉट इंक्लूडेड हियर. Therefore probability will be 3 by 4. Option C. So next question is, if two different dice are rolled together, one dice is rolled 2 times and 2 different dice are rolled simultaneously, the both things are same. दोनों ही सेम है. सो टोटल पॉसिबल आउटकम्स. अब यहाँ पर डाइस, what is the formula I've given? In one dice thrown, when one dice is thrown, कितने आउटकम्स है? 6. कितना बार डाइस थ्रो हुआ? 2 बार हुआ थ्रो. और 2 डिफरेंट डाइस रोल्ड हुए, दोनों बार सेम है. दैट इज 6 into 6 36. टोटल विल बी 36. द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन इवन नंबर ऑन बोथ डाइस. इवन नंबर ऑन बोथ डाइस. लेट्स सी क्या क्या पॉसिबल आउटकम्स हैं. स्टार्ट होगा 1 1 1 2 डॉट 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 रहेगा 1 6. सेम यहाँ पर रहेगा 2 1 2 2 डॉट 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 2 6. सेम फॉर 3 1 3 6. सेम फॉर 4 1 4 6. सेम फॉर 5 1 5 6. सेम फॉर 6 1, दैट इज 6 6. अभी इतना लिखने का ज़रूरत नहीं है. एट द एग्ज़ाम यू हैव टू थिंक, विजुअलाइज एंड यू हैव टू आंसर द क्वेश्चंस. सो इवन ऑन बोथ द डाइस, इवन नंबर हो जो बोथ द डाइस. यहाँ देखो, यहाँ पर इन फर्स्ट ऑप्शन विल बी कैंसल टोटली बिकॉज हियर पहला में तो 1 ही है, दैट इज़ ऑड. सेकेंड 1 इज़ ऑप्शन. 2 2 है फर्स्ट में, तो सेकेंड देखो ये 2 2 1 2 2 हो जाएगा और एक 2 4 हो जाएगा और एक 2 6 हो जाएगा. कितने हो गए यहाँ पर? 3 हो गए. ओके, बोथ डाइस में इवन नंबर है. नाउ गो फॉर 3. दिस होल विल बी कैंसल सेम बिकॉज 3 पहला में तो नहीं होगा. नेम सेम 4. 4 में यस इट कैन बी 4, 2 और एक 4 4 हो सकता है और एक 4 6 1 2 3. हियर ऑल्सो 3. ओके, नाउ 5 सेम, दिस वन विल बी कैंसल. अभी 6 में भी सेम 3 यहाँ पर 6 2 6 4 एंड 6 6. सेम यहाँ पर भी 3. कितने हो गए? 6 + 3 विल बी equals to 9. Okay, therefore the favorable outcomes is favorable outcomes is 9 and possible outcome 36. Therefore probability is 9 by 36. That is 9 1s are 9 4s are 1 by 4. Option D. Let's move to next question. A number is selected at random from numbers 1 to 30. The probability that it is a prime number. The total possible outcome कितने हो गए? 30 numbers हो गए. It is a prime number. Probability that it is a prime number. तो favorable outcomes कितने हो गए? Prime numbers कितने हैं? 13 1 to 30 के बीच में कितने prime numbers हैं? Let's see 2 same 3 5 7 11 13
17, 19, 23, 29 डायरेक्ट, ठीक है। 24, 25, 26 एंड 27 आर नॉट द प्राइम नंबर्स। 29 कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10। Therefore probability will be 10/30, that is 1/3, option D. नाउ यू हैव टू मेक रिमेंबर, देखो ये रिपीट हो रहे क्वेश्चन, तो यहाँ पर क्या करना, हमें रिमेंबर करना 1 to 10 कितने प्राइम नंबर्स, 11 to 20 कितने प्राइम नंबर्स एंड 20 to 30 कितने, एटलीस्ट 50 तक तो याद होना चाहिए, ऑप्शन डी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉरी, a card is drawn at random from a pack of 52 cards. The probability that the drawn card is not an ace. अभी cards के बारे में let's discuss about the cards. So total there are 52 cards. 52 cards. In that 52 cards, यहाँ पर 13, 13, 13, 13. What are they? One is spade, club, heart and diamond. Spade, you might have seen this, पान पत्ता बोलते हैं spade, and club will be like this. दिस इज ऑल्सो ब्लैक कलर, दिस इज ऑल्सो ब्लैक कलर, और हार्ट कैसे होता है, दिस इज रेड कलर एंड डायमंड विल बी लाइक दिस, दिस इज ऑल्सो रेड कलर, ओके, दिस आर द कलर्स। और अभी देखो एक स्पेड में 13 कार्ड्स होंगे, स्पेड के 13 कार्ड्स होंगे, ये पिक्चर के 13 कार्ड्स होंगे, ये पिक्चर के 13, हार्ट विल बी 13 एंड डायमंड विल बी 13। नाउ इन स्पीड, स्पीड में क्या क्या होंगे, नंबरिंग विल बी फ्रॉम 2 3 4 5 6 7 8 9 10, फ्रॉम 2 to 10 नंबर्स विल बी देयर। उसके बाद क्या होगा, एक एस होगा और 3 फेस कार्ड्स होंगे, 3 फेस कार्ड्स क्या क्या होंगे, किंग, क्वीन एंड जैक, हो गए 13। हाउ मेनी नंबर्स आर देयर, सी हियर आर 9 नंबर्स, 2 to 10 क्या हो गया, 9 नंबर्स हो गए, यहाँ पर एक एस हो गया, 10 हो गया, और यहाँ पर 3 कितना हो गया, 13 कार्ड। टोटल सेम थिंग विल बी इन दिस ऑल्सो, ये सब इसमें भी सेम है, हियर ऑल्सो सेम, हियर ऑल्सो सेम, कलर विल बी डिफरेंट। नाउ द प्रोबेबिलिटी दैट द ड्रॉन कार्ड इज़ नॉट एन एस, तो अभी नॉट एन एस का बहुत मुश्किल है, बहुत लंबा हो जाएगा, एस तो 4 ही हैं, नॉट एस मीन्स यहाँ पर एस को छोड़ के कितने हैं, सो दैट इज़ डिफ़िकल्ट। सो व्हाट वी विल डू, देयर आर 2 मेथड्स, आइदर यू कैन फाइंड आउट बाय दिस वन, आइदर वी विल डू, वी विल फाइंड आउट फॉर द प्रोबेबिलिटी ऑफ एस, इवेंट ऑफ गेटिंग एन एस, एस कितने हैं, यहाँ पर एक, हियर 1, हियर 1, हियर 1, हियर 4, तो 4/52, 4 1s are 4 1s are 4 3s are, that is 1/13. Now we know the formula that probability of getting event plus probability of not having that event means not an ace, same thing, the card is not an ace will be 1. Now therefore probability of not an ace क्या हो जाएगा मेरा, 1 minus probability of having that event, that is 1 minus 1/13, that will be 12/13, okay, option D, okay. आइदर व्हाट यू विल डू, 4 जो एस हैं वो माइनस कर दोगे 52 कार्ड में से, माइनस करने के बाद यू कैन फाइंड आउट इजीली दैट मच आउटकम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, now 2 dice are thrown together, the probability of getting the same number on both dice, total possible outcome is 2 dice are thrown together, 2 dice का क्या बोला था, 6 to the power 2, that is 36. now the probability getting the same number on both dice,
बोथ डाइस में सेम नंबर कब होता है? जब 1 1, सेम 2 2, 3 3, 4 4, 5 6, 6 6। कितने नंबर? 6 नंबर्स हो गए। 3 3, 4 4, 5 5 एंड 6, 6. This is the favorable outcomes, that is 6. Therefore probability will be 6 by 36. 6 1 just 6 6 जा, that is 1 by 6. Option C. Next question. In a family of 3 children, the probability of having at least one boy is. Now what is the total possible outcomes? एक फैमिली है, उसमें how many children are there? 3 children are there. Okay, 3 children means what are the possibility? क्या होना चाहिए? 3 children में से एक boy होना चाहिए. बॉय, 3 बॉय हो सकता है. एक बॉय और गर्ल होना चाहिए. और एक बॉय गर्ल बॉय होगा. और एक बॉय और 2 गर्ल हो सकता है. और क्या है चांसेस? गर्ल 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 और गर्ल गर्ल बॉय और गर्ल बॉय गर्ल और गर्ल बॉय एंड बॉय. कितने हो गए टोटल? 8. इट्स लाइक सेम एज द टॉसिंग ऑफ कॉइन जैसे टॉस करते 3 टाइम्स, वैसे 3 चिल्ड्रन होने का. दिस आर द टोटल पॉसिबल आउटकम्स. तो व्हाट इज द फेवरेबल आउटकम्स? हैविंग एटलीस्ट 1 बॉय. एटलीस्ट मीन्स कम से कम. आई हैव टोल्ड यू कम से कम एक होना चाहिए. ज़्यादा होगा भी तो चलेगा. कम से कम 1 बॉय, एटलीस्ट 1 बॉय, 1, एटलीस्ट 1 बॉय, एटलीस्ट 1 बॉय. उससे ज़्यादा होगा भी तो चलेगा. दिस इज़ ऑल्सो इंक्लूडेड, दिस इज़ ऑल्सो इंक्लूडेड, दिस इज़ ऑल्सो एंड दिस इज़ ऑल्सो. एक होना चाहिए, उससे ज़्यादा होना चाहिए. दिस वन इज़ नॉट बिकॉज टोटली नॉट ए बॉय. सो कितने हो गए? 7. ओके, देयरफॉर प्रोबेबिलिटी विल बी 7 by 8. Option A. Next questions will be uploaded in my next video. Thank you everyone.